Hello students, welcome to my channel Basic Mathematics. Today we will discuss about the problems in exercise 2A of elements of mathematics. Right? Already we have discussed up to question number 10. Right? 10 number पर्यंत आमे completely सबुडा प्राय डिस्कशन करि सारिचु. देखिबा बे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन जो थरे कि केते गुडा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अछि से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन गुडी को टिके ट्रिकी अछि टिके देखो क्लियर अंडरस्टैंडिंग थिले अबाउट सेट इट्स रिप्रेजेंटेशन सबसेट पावर सेट एगुडी का हम आराम रे करि परिबा. क्वेश्चन नंबर 11 ए. Determine the truth or falsity of the following propositions with reasons. Determine the truth or falsity of the following propositions with reasons. तमाने तळे केते गुडा स्टेटमेंट देइची हेले केते गुडा प्रपोजिशन बा स्टेटमेंट देइची से गुडा को ट्रू की फॉल्स से जिंस हम डिटरमिन करबा लिखिबा एवं काहे की ट्रू काहे की फॉल्स से रीजन दबा. राइट. सपोज इट अछि क्वेश्चन नंबर 11 ए रे 1 2 does not belong to 1 2 3. Right. It does not belong to 1 2 3. तो कौन सी जिंस है? Now you see, it is a set. 1 2 जो it is a set. This is another set. Its elements are simply numbers 1 2 3. No element of यार कौन से एलिमेंट गोटे सेट नुहे. तो एठी कौन हे पारे एटा एदर नाही ता माने इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. इट डज नॉट बिलोंग टू दैट. काहे कि ना आज 1 2 is a subset of this 1 2 3. ये तार सबसेट एटा तार एलिमेंट नुहे. राइट. नंबर B. A is a subset of A for any set A. What is your matter? It is true. Every set has a proper subset. C रो प्रत्येक सेट रो गोटे प्रॉपर सबसेट अछि. ट्रू ना फॉल्स? फॉल्स. काहे कि नल सेट रो phi has no proper subset. No proper subset. So the given statement is false. False because phi has no proper subset. Phi is a set which has no proper subset. Null set. Null set means it has no element. Then the proper subset कोड अछि. D देला every set is a proper subset of the same set. केमती प्रियो प्रॉपर सबसेट हमें केते बेले कहबा जेते बेले a टा b रो सबसेट हेइथिबो but b is not a subset of a. A is a subset of b but b is not a subset of a. Then a is called a proper subset of a. एटा b रो सबसेट होथिबो. That means a is a subset of b but there exists at least one element in B which is not present in B रे अति कम रे गोटे एलिमेंट रहइबो जे A रे रहइबो नाही. राइट. For any object x there is a set A such that x belongs to A. कौन कहूची इटा? For any object x is an object. Right. से कहूची प्रत्येक ऑब्जेक्ट पे for any object x there is a set A such that x belongs to A. Yes, x belongs to the set containing x.
right? हमें जब सिंपली एतिक लिखबा this is my a, so it is true. X belongs to this set, so for every object I can get a set where x is an element, जोठी कि x टा उठे तारा element है थी वो, right? अब तब set भीतर रखी देले, तले it is an element of that set, so it is true, right? For every object x, there is a set A, so that x does not belong to that. Yes, x belongs to this. Suppose if let x be an object and A be any set, then clearly x does not belong to B, where B is equal to कितने नवा में A difference this, A difference this, हम difference पढ़ी नहीं पढ़िबा A difference त माने सेट रो ए x थिबा त बाद दिया yes ए सेट रे x केबे रहिबो नहीं, so it is also true. If ABC are sets, then either A is equal to B or A is a subset of B or B is a subset of A. Law of trichotomy हमें पढ़ी थिले नहीं, हमें पढ़ी नहीं तो मैं स्कूल में पढ़ी थी वो law of trichotomy in the case of real numbers. If A and B are any two real numbers, A and B are real numbers, then A is less than B, or A is equal to B, or A is greater than एटा B टू छोटा हेतिबो नले एटा इक्वल टू B हेतिबो नले एटा ग्रेटर देन B हेतिबो, ए होची कथा तीनटा केस एटा कोइ छै लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। एठी सेमति से कहूची जे ए बी सी तीनटा सेट जदी हेतिबो सी दरकार नै, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स सी नै छी ना दरकार नै, if A and B are any two sets, then এটা false ଆସିବ। देखो A B जेकोसी दिटा सेट हेले से कहूची आइदर A टा B रो सबसेट हेतिबो नहले A is equal to B हेतिबो नहले B टा A रो सबसेट हेतिबो, B टा A रो सबसेट है पॉसिबल नो, कहीं कि हमें नवा एग्जांपल सपोज A is equal to A B C, B नवा B C D, these are two sets, here A is not a subset of B, कहीं कि A अच्छी A रे जोटा कि B रे नहीं, A एलिमेंट A रे अच्छी किंतु एठी नहीं, तेनु एटा B रे सबसेट हे परिबोनी, B is also not a subset of A, कहीं कि B और C D अछि एठी जोटा कि एठी नहीं, A रे नहीं, तेनु B is not a subset, also they are not equal, तेनु they are not equal, equal केते रहबो यार सब एलिमेंट एठी थिबे यार सब एलिमेंट एठी थिबे जोटा कि नाही, तेनु A टा B रो सबसेट नुहे कि B टा A रो भी सबसेट नुहे कि A is equal to B भी नुहे, तेनु एठी लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी काम करिवो नाही, so the given statement is false, right? G is false, yes. Next हमें देखिबा F G H रछि A belongs to हमको जणा पड़छि कोन एटा एठी अछि
नो ये जो सेट ए सेट रे एलिमेंट गोटे अछि से एलिमेंट के the set containing a, so it does not belong, it is false a nahi, right? tapare a belongs to it be a is not equal to b, simply a belongs to set I to be false, then j, if a is a proper subset of b, b is a subset of c, then a is a proper subset of c. Yes, eta b ର proper subset ଆଉ b ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ c ର simply subset, ତେଣୁ a will be a proper subset of c. କାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ b ରେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ k ରେ ନାହିଁ, b ରେ ଅଛି ମାନେ ଏଠି c ରେ ଅଛି a ରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଟା c ର proper subset ହେଇ ପାରିବ. k, a is a subset of null set if and only if a is equal to phi. Yes, it is correct. काहेकि एटा माने कर a is a subset of phi, but phi is also a subset of a null set is the subset of every set, so a is equal to phi, a is equal to phi. Conversely, a is equal to phi, automatically a is a subset of phi and phi is a subset of a, right? So it is true. Yes. Question number 12. Now we will discuss question number 12. Question number 12 कौन कहूची? Write down the power set. ओ एक हम तुम्हारा power set लिखिबो all possible subsets. हम तो केते बडे करिथिले तथापि ए भितर टिके जोटा क्लमजी अछि मु करूची. Right. Suppose अछि, yes, it would set niala a, suppose it is a this a b, right? एटा ए सेट ର पावर सेट कितना एलिमेंट रहला? तीनटा एलिमेंट. This is one element, this is another, they are not same. This is a and this is the set containing a and this is the set containing ab, right? This is an, yes. So power set of a जेतबे मु लिखिबी मु कोन करबी? First null set नेबी, because null set is the subset of every set. Then the set a element को गोटे set भीतर रखिबा. Yes, ये गोटे हो तापरे a element को गोटे set भीतर रखिबा केमति रहबो एमति, तापरे a को गोटे रखिबा this, बुझिला? माने कर एटा p q r थांदा p q r. हमें फर्स्ट नले null set, गोटे set containing p, set containing q, set containing r. तापरे हमें कोन करबा? दीटा नबा. हां बा हां यस, फर्स्ट दीटा ए दीटा कोन a आओ द सेट containing गोटे, तापर पुणी a द सेट containing ab. ताले a सेट सहित r, a सहित r, तापर आसवा एटा सहित एटा. Yes, this एतिक आसीगला. Yes, दीटा सरीगला. तुमको पुणी एटा या संगे ना एटा ऑलरेडी अछि. तापरे टोटल a b, this is the set and it is bus. So now this is your power set. It has
how many elements you see? 1 2 3 4 5 6 7 8. Cardinality of A is 3. Cardinality of the power set of A is 8. That means it is 2 to the power 3. Right? So से बेला तुम सब करिवो 13 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी आई हैव डन इट power set of A is a subset of power set of B if and only if A is a subset of B when the inclusion power set of A will be proper subset of power set of B proper केते होला if and only if A is a proper subset of B एटा जदि B रो proper subset ताले पावर सेट ऑफ A टा पावर सेट ऑफ B रो प्रॉपर सबसेट हे परिबो ओके अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 ता पूर्व से कार्डिनलिटी विषय कहिची कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट is the number of elements present in the set cardinality of a set A which is known as is equal to the number of elements in A represent करा जाए एमती cardinality of A or NA like this cardinality of the set इथरा में दी प्रकार सेट पाइबा गोटेला finite set A is a finite set if cardinality of A is finite बोले बुझी परछ गोटे निर्दिष्ट रियल गोटे नेचुरल नंबर गोटे पॉजिटिव इंटीजर आसीबो निर्दिष्ट 5 टा कि 6 टा कि 10 कोटी 15 कोटी कि 100 कोटी गोटे फाइनाइट वैल्यू आसीबो इनफाइनाइट if cardinality of A is infinite right तो जानते the set of natural numbers is an infinite set of integers set of real numbers set of rationals all are infinite sets because they have infinite केबे लेखुथिबा टेबुलर फॉर्मूला सॉरी बनी right the set of real numbers is also an infinite sets दिभार विभक्त गोटेला काउंटेबल आ गोटेला अनकाउंटेबल से कथा हम परे डिस्कशन करबा हमें फंक्शन पढ़सला परे ओके सो दिस इज अबाउट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट एठी गोटे जिंस हमें सिखिबा जोटा कहूछ हमें similarity of sets similarity of sets कौन सेटा है of sets two sets टू फाइनाइट सेट्स इनफाइनाइट सेट रो वर्तमान हमें करि परिबा केतेबेले दे आर सिमिलर और नॉट सेटा में पर एक काउंटेबिलिटी टेस्ट कला पर करि परिबा टू फाइनाइट सेट्स आर सिमिलर if they have same cardinality they have same cardinal number same cardinality or cardinal number यदि same cardinality रहिला ताले हम त कहबा similar sets सपोज गोटे एग्जांपल दबा में A होची P Q R B होची A B C
D होची A B C D E, right? Here cardinality of A is 3, cardinality of B is also 3, cardinality of D is 1 2 3 5. So here A is similar to B, or A and B are similar. They are similar. We write it as A is similar to B. A is similar to B. Represent करवे में symbolically like this. ହେଲା ताले जिते बेले सेम कार्डिनालिटी थिबो जो सेट गुडा कर फाइनाइट सेट गुडा कर से गुडा को हमें कहबा दे आर सिमिलर सेट्स because they have same number of elements. They have same number of elements, right? अच्छा ताहले वर्तमान देखिबा तळे देइछि से केते गुडा कारण नंबर पचारची तापरे 15 नंबर कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड व्हिच आर इनफाइनाइट जोथरे इनफाइनाइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स इनफाइनाइट इज सब द सेट ऑफ एबे कहि सेलेन द सेट ऑफ इंटीजर्स द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स prime numbers even integers all are infinite sets, then verify power set of phi is 2 to the power 0 तामाने null set रा power set लेखिबो एगुडा मु जेमति कलिनी गोटे केतरा power set लेखिलेनी तुम देखिबो एगुडा चेक कर दबो समानकर कार्डिनलिटी समान आसीबो 17 number find the number of elements of the following sets ता माने cardinality of null set केते 0 cardinality of the power set of this कौन कहछि find the number of elements, right? Power set of phi केते हबो 2 to the power 0 that is 1. Cardinality of the power set of phi तार cardinality ए सेट रे केतरा एलिमेंट अछंती गोटे एलिमेंट अछंती तले यार पावर सेट रे केते एलिमेंट रहबे 2 to the power 1 that is 2. power set of phi यार cardinality केते हबो 2 to the power 2 that is 4. ए भले आसीबो सो तापरे लास्ट अछि चारिटा टी पावर सेट ऑफ out 2 to the power 4 कहीं गैर कर्नल ला 4 आर पावर सेट तार कर्नल ले आसीबो 2 to the power 4 that is 16, right? 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 2 to the 2 to the 2 je 4, right? एबळे बड बड जिवो okay. So this is about cardinality of the power sets. Next
Prove by method of induction that if A has n elements, then cardinality of power set of A is 2 to the power n. एटा प्रमाण करिया पे हेले हमको यूनियन पढ़ियो यूनियन नहल भी एमती भी कर देबी देखि दियो. Can you say how many elements has power set of A if A has n elements? Yes, A has last number question number 19. Cardinality of A is n. तले power set of A रो cardinality केते 2 to the power n. Cardinality of the power set of A केते आसीबो 2 to the power 2 to the power 2 to the power এটা 4 to the power n नुए केबे नुए 2 to the power 2 to the power n 2 to the power n जति के आसीबो से this is the cardinal. So let us prove by method of induction question number 18, right? Question number 18. Yes. अच्छा coach से cardinality of A is n implies cardinality of the power set of A is 2 to the power n. এটা প্রমাণ আমি করি. Let a n আমি রাখিবা x1 x2 x3 up to xn. N is this. For n is equal to 1 हमें कौन करिबा a1 केते हला only one element x1 ता माने this implies a for n is equal to 0 a0 it contains no elements. So power set of A0 will contain this only the null set. Here cardinality of A0 is 0 and cardinality of the power set of A0 is just equal to 1, that is 2 to the power 0. Proved. For I want to test कर परिवा n is equal to 1 A1 केते आसीबो only one element n is equal to 1 माने कोन गोटी एलिमेंट थिबो x1 सपोज ताले yes this implies power set of a1 कोन आसीबो null set and this set containing the power cardinality of the power set of a1 is 2, that is 2 to the power 1. Here cardinality of a1 is equal to 1. Right, thus the statement is true for n is equal to 0 and 1, right? Let it be true for n, that is cardinality of an is equal to n implies is n and cardinality of the power set of an is equal to 2 to the power n, right? এটা মনে করা সত্য অটে n টা এলিমেন্ট রইলে cardinality of the power set of an আসবো 2 to the power n. Now for let A and B x1 x2
x3 up to xn. Now an plus 1 for n plus 1, an plus 1 रे केतिटा एलिमेंट रहइबो आ गोटे एलिमेंट अधिका नबा x1 x2 x3 up to xn तापर नबा xn plus 1. अच्छा पिले जो गुडा का सब an रो सबसेट हबो if S is a subset of an then S must be a subset of an plus 1 ना नहीं and S union xn plus 1 is a subset of n plus 1. यूनियन पढ़ी मु से पे कहतली यूनियन पढ़ी सारा पर एटा करिया पे जदी s टा an एई सेट रो गोटे सबसेट हुए ताहले s टा भी an plus 1 रो सबसेट हबो ता सहित ई जो नुवा एलिमेंट हम गोटे नेले xn plus 1 ता संगरे को जोड़ी देले से भी an plus 1 रो सबसेट हबो ता माने an रो गोटे सबसेट रू हमें दुईटी सबसेट जनरेट करि पारुचु राइट विथ द हेल्प ऑफ xn plus 1 ले thus one subset of an generates two subsets of an plus 1. So the total number of cardinality of the power set of an plus 1 will be what? It is 2 into cardinality of the power set of an. This is equal to 2 into 2 to the power n, that is 2 to the power n plus 1. Thus Pn implies Pn plus 1, right? Thus, if the statement is true for n, then it is true. Pn mu lekhini then in this statement thus, if the statement is true for n, then it is true for n plus 1, right? এটা थिला हमर स्टार এটা डबल स्टार कर दबा from by using principle of induction to star and double star we have the statement cardinality of A is n implies cardinality of the power set of an is 2 to the power n for every natural number natural n, right? कथा हला हमें देखो एडी प्रथमे कोन नेले जे जो सेट रे किछि एलिमेंट नथिबो a0 इट हैज नो एलिमेंट यार कार्डिनलिटी होची कार्डिनलिटी ऑफ an a0 इज इक्वल टू 0 पावर सेट रहला गोटे एलिमेंट कार्डिनलिटी ऑफ दिस 2 टू द 0 फॉर n इज इक्वल 1 इट गोटे एलिमेंट नेतले यार कार्डिनलिटी 1 पावर सेट बाहर करले तार कार्डिनलिटी स्लैश 2 टू द पावर 1. Thus the statement is true for 0 1 by be true. Let it be true for n. तामने cardinality of an जदि n हुए cardinality of the power set of an आसीबो 2 to the power n. अच्छा हमर गोटे कथा हला हमें एमती नबा an रे n टा एलिमेंट अछंती n plus 1 हमें जनरेट जो करिबा आ गोटे एलिमेंट अधिका नै कि केवल यार भीतर जति एलिमेंट अछंती ता संगरे आ गोटे अधिका एलिमेंट हेला कोन
ना यार पावर सेट रे कोन अछि ऑल सबसेट्स ऑफ दिस सेट तले या an रो जे सबसेट मन करे s गोटे an रो सबसेट तेनु एई s रु हमें दीटा सबसेट ऑफ an + 1 पाई काहे कि ना s रो सबतक एलिमेंट an रो अछंती माने an + 1 रहिबे तेनु s टा an + 1 भी सबसेट हला एवं ए जो सबसेट रे आ गोटे ऐड करबा एलिमेंट हमें xn + 1 ताले से भी गोटे an + 1 रो सबसेट काहे कि xn + 1 टा an + 1 रो अछि आ s रो समस्त एलिमेंट an रो अछंती माने an + 1 भी अछंती तेनु ये निश्चित भाव यार गोटे सबसेट हो तेनु यार प्रत्येक सबसेट an + 1 पई दुई दुईटी सबसेट जनरेट करूछंती ताहले कौन हला टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ n + 1 केते हबो ना टोटल पॉसिबल सबसेट्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स केते ना 2 into the number of subsets of n ना that is cardinality of the power set 2 into 2 to the power n that is 2 to the power n plus 1 ताले n by 2 ले n plus 1 by 2 होइगला so by principle of induction the statement is true for every natural number n okay this finishes your exercise to a next time I am discussion kariba about operation algebra of sets operations set operation हमें addition algebra रे सब पढ़िथिले the set of real numbers रे हमें पढ़िथिले कोन addition operation multiplication operation इन सब डिफरेंट ऑपरेशन पढ़िथिले हमें जोड़ा कहउथुर हमें बाइनरी ऑपरेशन सिमिलरली सेट रे भी सब सेट रो अलजेब्रा अछि सेट बाइनरी ऑपरेशंस सब अछि यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस एटसेट्रा हमें ताकू सब नेक्स्ट लेक्चर रे पढ़िबा ओके ठीक अछि।